মহাপুৰুষ শংকৰদেৱক বিচাৰি ব্যাকুল হৈ পৰিছে এগৰাকী মহিলা। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ঘূৰি ফুৰিছে এইগৰাকী অনা অসমীয়া। কিয় হঠাতে আকৌ চৰ্চালৈ আহিছে গুৰুজনা? কিয় বিচাৰিছে গুৰুজনাক? চাওকে এই প্ৰতিবেদনত। অসমৰ মাটিত ভৰি দিয়ে শংকৰদেৱক বিচাৰি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ঘূৰি ফুৰিছে এগৰাকী মহিলা। যিখন ৰাজ্যত অসমীয়া জাতিৰ গুৰুজনাকে কোনো লোকে হু ইজ শংকৰদেৱ বুলি প্ৰশ্ন কৰা শুনিবলৈ পোৱা যায়, যিখন ৰাজ্যত গুৰুজনৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজি সদায় বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰা দেখা যায়, সেইখন ৰাজ্যলৈ গুৰুজনাক বিচাৰি বাট কুৰিবাই আহিছে এগৰাকী মহিলা। অসমীয়া জাতিৰ গুৰু শংকৰদেৱ যেন এতিয়া তেওঁৰ বাবে এক মৰিচিকা, যাৰ পম খেদি পঞ্জাৱৰ পৰা আহি উপস্থিত হ'লহি অসম গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত। এতিয়া কথা হ'ল, হঠাতে গুৰুজনাৰ প্ৰতি এগৰাকী অনা অসমীয়া কিয় ইমান ব্যাকুল হৈ পৰিল? শংকৰদেৱৰ লগতে তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিক বিচাৰি মহিলাগৰাকীয়ে হাবাথুৰি খুৰা আঁৰত কি ৰহস্য আছে? প্ৰিয় দৰ্শক, সুদূৰ পাঞ্জাৱৰ পৰা যোৰহাটৰ কছাৰী মৈদামৰ অসম গ্ৰন্থমেলালৈ আহিছে এগৰাকী বিশেষ মহিলা, যিগৰাকী বিশেষ মহিলাই শংকৰদেৱক বিচাৰি আহিছে। এয়া সঁচাকৈ এটা অসমীয়া জাতিৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় যে শংকৰদেৱক বুকুত ৰাখি কেৱল আমাৰ অসমতে চৰ্চা নহয়, বাহিৰতো কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আলোড়ন সৃষ্টি কৰিব পৰাকৈ এক চৰ্চা কেন্দ্ৰ হৈছে। সঁচাকৈ এক গৌৰৱৰ বিষয়। আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁ কি বিচাৰি আহিছে, কিয় বিচাৰি আহিছে শংকৰদেৱক। মেম, first of all, heartily and cordially welcome to Assam Flash. And first of all, we want to know from you that why are you coming from Punjab University to Chandigarh University to Assam Book Fair, Jorhat? मेरा नाम प्रोफेसर योजना रावत है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हिंदी की प्रोफेसर हूँ। असम गवर्नमेंट ने हमें एक बहुत बड़ी अनुदान राशि दी है कि हम अपने विश्वविद्यालय में शंकरदेव चेयर इस्टेब्लिश करें। वो हो चुकी है शंकरदेव चेयर, और मैं 2 महीने पहले इसकी कोऑर्डिनेटर बनी हूँ। तो इस चेयर के अंतर्गत हम बहुत से काम करेंगे। सबसे पहले इसका मेन उद्देश्य ये है कि नॉर्थ इंडिया के, उत्तर भारत के लोगों को शंकरदेव के साहित्य से, उनकी कलाओं से, उनके व्यक्तित्व से और उन्हें जो योगदान दिया भक्ति मूवमेंट में, भक्ति आंदोलन में, उससे लोगों को परिचित करवाया जाए। और इतना ही नहीं, उनके ऊपर रिसर्च भी हम करवाएं। तो इसके लिए एक योजना बनाई जा रही है, और कोऑर्डिनेटर होने के नाते मुझे लगा कि मैं आसाम जाके आऊँ, उस जगह तक पहुंचूं जहां उनका जन्म हुआ, जहां पे उनकी इतनी मान्यता है, उनके इतने सत्राज हैं, और जहां पे विद्वानों ने उनके ऊपर इतना काम किया है, इतनी रिसर्च की है, क्योंकि हमारे वहाँ उत्तर भारत में उनके ऊपर इतना साहित्य मिलता नहीं है। तो इसलिए मुझे मन में जिज्ञासा हुई, तो मैंने ये काम यात्रा का कार्यक्रम बनाया। और उसका मुझे सबसे बड़ा लाभ ये है कि मैं यहाँ पे कई लोगों को मिल रही हूँ, तो उससे मुझे प्रेरणा भी मिलेगी, और मैं उनके साथ मतलब बातचीत भी करूँगी किस तरह से हम इस चेयर के अंतर्गत बच्चों को काम कराएं। तो इसमें मेन हमारा मुद्दा ये, अभी हमने 2 लेक्चर करवाए हैं वहाँ पे शंकरदेव जी के ऊपर, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में हम शंकरदेव के ऊपर बच्चों को रिसर्च के लिए प्रेरित करेंगे। सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। जो हमारे संगीत के विद्यार्थी हैं, म्यूज़िक डिपार्टमेंट के, उनको हम इसमें लेंगे ताकि वो शंकरदेव के जो पद हैं उनके गायन कर सकें। और संस्कृत के, हिंदी के, अंग्रेज़ी के जो लैंग्वेजेस के छात्र हैं विशेष रूप से, और सोशियोलॉजी के, उनको हमने इसमें कोशिश करेंगे हम उनको इससे जोड़ने के लिए। तो ये हमारा उद्देश्य है। Wow, what an amazing purpose, ma'am. Today I am and we are feeling so proud as an Assamese. हम जानना चाहेंगे कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो धर्म के ऊपर बहुत सारा चर्चा कर रहे हैं पिछले समय पर। आप शंकरदेव को क्यों चुना है? देखिए, असम गवर्नमेंट के लिए मैं उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। तो असम गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था, उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी को चुना कि जिस व्यक्ति ने इतना काम किया, समाज में इतना बड़ा परिवर्तन किया, और एक ये संदेश दिया कि मानवता का धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन चूंकि वो आसाम के थे और यहीं उन्होंने अपना जीवन अधिकतर गुजारा, उनका जो लेखन है वो भी ज़्यादा एसमी में है। तो ये सरकार का एक मतलब इनिशिएटिव है असम गवर्नमेंट का कि उत्तर भारत में भी लोग शंकरदेव के काम से परिचित हों, उनकी प्रेरणा से वो प्रेरित हों, और उन्होंने जो संदेश दिया है वो जन तक पहुँचे। तो उन्होंने हमारी विश्वविद्यालय को ये ग्रांट दी, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं बड़ी उत्साहित हूँ, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले इसका चार्ज लिया है एज ए कोऑर्डिनेटर, और इसमें हम एक प्रोफेसर चेयर भी नियुक्त करेंगे। तो हम एक ऐसा स्कॉलर भी
असम से कोई होगा जिसने बहुत काम किया है, उसको हम चेयर ऑफ़र करेंगे और फिर हम उनके मार्गदर्शन में काम करना चाहेंगे। वाह मैम, आपका जो उद्देश्य है इतना महान है। और जो असमीज़ का जो गुरु है वो गुरु असमीज़ का जो गुरु है शंकरदेव को आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो और जो उसका जो प्रचार कर रहे हो, जो अलग सा जो महत्व एक उद्देश्य है वो सफल है और हमारे हार्दिक ऐसे मनोकामनाएं हैं। योजना रावत পেছাত এগৰাকী পঞ্জাৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা, যি উত্তৰ ভাৰতত অসমৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু তেখেতৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজিক বহল পৰিসৰত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। ভক্তি আন্দোলনত গুৰুজনাৰ অমৰ অৱদানসমূহক কেন্দ্ৰ কৰি শংকৰদেৱৰ সকলো বিষয়বস্তু সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰতত প্ৰচাৰ কৰা মানসেৰে এগৰাকী অধ্যাপিকাই যি গুৰুদায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া সমগ্ৰ অসমৰ অসমীয়া জাতিৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয়। বিশেষকৈ বিভিন্ন ভাষাৰ প্ৰবল মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমন্বয়ত শংকৰদেৱক উত্তৰ ভাৰতত প্ৰচাৰৰ এই যি মহৎ কৰ্ম সেয়া সঁচাই এক প্ৰশংসনীয় বিষয়। অসমীয়া জাতিৰ গুৰুজনাক প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা মহৎ কাৰ্যবোৰত আমি সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাটো আমাৰ নৈতিক দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। शंकरदेव की ऐसी शख्सियत हैं, वो केवल असम के नहीं, मुझे लगता है कि वो एक विश्व गुरु हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और समाज को राह दिखाई और जो हमारे समाज में धर्म के नाम पे जो कुरीतियाँ थी उनका उन्मूलन किया, उनको उखाड़ा और एक ऐसा संदेश दिया जो कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। और इस जुड़ाव की वजह से मैं यहाँ आई हूँ। मुझे अचानक लगा कि पुस्तक मेला भी है और ज्योति रेखा मित्र हैं और इनके सौजन्य से बड़े लोगों से मिलना हुआ, तो एकदम खिंचाव हुआ मुझे यहाँ पे आने का। और आज मैं सुबह 17 गई, मतलब आई वॉज सो इमोशनल, आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड। तो एक कुछ वहाँ के माहौल में एक वो था, कुछ ऐसा जिसे कहते हैं बड़ा एक मिस्टिक एटमॉस्फेयर था जिसने मुझे बहुत प्रेरित किया और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संयोग है मेरे लिए कि मैं काम कर पाऊँगी इसमें। मैम, आपकी जो महान कर्म है, जो आपका उद्देश्य है, उसके लिए बहुत आज गर्वित महसूस कर रही हूँ एज एन असमीज़। आप अपने काम पर सफल रहिए, यही सही दिल से एक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को आगे बढ़ाएं और आप तक सारी खबरें पहुंचेंगी, क्योंकि असम गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे हम अपने सेमिनार्स में, और यहाँ के जो बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं जिन्होंने बहुत काम किया है उनको बुलाएंगे चंडीगढ़ में। और हम चाहेंगे हमारे बच्चे जो हैं वो रिसर्च करें और समय आने पे कभी मौका मिलेगा तो इसमें ट्रैवल ग्रांट भी है, हम बच्चों को भी यहाँ लाना चाहेंगे। ओके, थैंक यू सो वेरी मच মেম এণ্ড গড ব্লেছ টু ইউ। এণ্ড প্ৰিয় দৰ্শক, যিখন ৰাজ্যত হুইজ শংকৰদেৱ বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় সেইখন ৰাজ্যলৈ পঞ্জাৱৰ চণ্ডীগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এনেদৰে শংকৰদেৱ পঞ্জাৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা চণ্ডীগড়ৰ পৰা আহিছে শংকৰদেৱক বিচাৰি, যথেষ্ট এটা গৌৰৱৰ বিষয়। আমাৰ লগত কাব্যনন্দিনী আছে, জ্যোতিৰেখা হাজৰিকা বাইদেউ। কিদৰে তেখেত আহি আমাক শংকৰদেৱ বিচাৰিলে? আচলতে মই তেওঁক লগ পাইছিলোঁ 16ৰ পৰা 18 জুনলৈ হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্য উৎসৱত, আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ আমি দুই বান্ধৱী হৈ পৰিছিলোঁ দুয়ো, আৰু মনৰ মিল আছিল। তেখেতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ চণ্ডীগড়লৈ। যেতিয়া আমাৰ যিখন ফ্লাইট চণ্ডীগড়ৰ পৰা আহিছিল দিল্লীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়, লগ পালোঁ আৰু এটা সুন্দৰ আবেলি মোক খুব সুন্দৰকৈ আপ্যায়ন কৰিলে আৰু আমি খুব মনৰ মিল হ'ল, ভাল লাগিল। আৰু এদিন কৈছিলোঁ যে মোৰ ঘৰলৈ আহিবা। সঁচাকৈ এটা ফোন আহিল যে জ্যোতিৰেখা মই অসমলৈ গৈ আছোঁ, কাৰণ কি শংকৰদেৱক বিচাৰি। গতিকে অভিভূত হ'লোঁ যে মানে পাঞ্জাৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত শংকৰদেৱৰ অধ্যয়ন হ'ব আৰু বিশেষকৈ ডক্টৰ যোজনা ৰাৱত হ'ব কোঅৰ্ডিনেটৰ। আৰু সেইবাবে অসমলৈ কাক বিচাৰিব, কাক লগ ধৰিব সুধিলে, এতিয়া মই কৈছোঁ তুমি বৰদোৱা চোৱা, বৰপেটা চোৱা আৰু বিশেষকৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাজনো ব্যক্তিক লগ কৰা। তেওঁ গুৱাহাটীত আহিয়ে তেওঁ লগ কৰিলে অনুৰাগমা পূজাৰী আৰু গুৱাহাটীৰ কিছু স্থান চালে, কলাক্ষেত্ৰ চালে, আৰু আজি পুৱা 7 বজাত আহি নগাঁৱৰ শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বৰদোৱা চালে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিলে ডক্টৰ সঞ্জীৱ কুমাৰ বৰকাকতীয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত নগাঁৱৰ পৰা আহি যোৰহাট, আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত। কাইলৈ আমি পুৱাই 7 বজাত আমি যাত্ৰা কৰিম মাজুলীলৈ। আৰু তেওঁৰ উদ্দেশ্যই হ'ল শংকৰদেৱক মানে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত মানে জ্ঞাত হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু পাঞ্জাৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দায়িত্ব তেওঁক দিছে। আমি অতি আশাবাদী। আজি এখন কিতাপ প্ৰকাশ পাইছে ধৰা ৰাতুল চন্দ্ৰ বৰাৰ শংকৰদেৱৰ বিষয়ে ইংৰাজী ভাষাত, আৰু এইটোৱে আমাক আচলতে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি শংকৰদেৱকটো প্ৰতিষ্ঠা আগতে হৈছে, আকৌ নকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। মই ভাবোঁ যে হিন্দী ভাষাত বিশেষকৈ শংকৰদেৱৰ যেতিয়া অধ্যয়ন বেলেগকৈ হ'ব, তেনেহ'লে ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত শংকৰদেৱে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত সুকীয়া মাত্ৰা পাব। আৰু আমি বান্ধৱী হিচাপে যিমান পাৰোঁ তেখেতক সহায় কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। আৰু মই
বিশেষকৈ কাইলৈ মাজুলী, পৰহিলৈ পুৱাই মই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ, আউনীআটী সত্ৰ আৰু এই গোটেইখিনি সত্ৰ দেখুৱাম। মই আশা কৰিম তেওঁ এটা সুন্দৰ মনেৰে ইয়াৰ পৰা শংকৰদেৱ শীৰ্ষক গ্ৰন্থ ক্ৰয় কৰি বা আমি উপহাৰ দি তেওঁলৈ পঠিয়াই দিম আৰু পঞ্জাৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শংকৰদেৱ জ্বলি উঠিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৰ বাবে ইয়াতকৈ গৌৰৱৰ বিষয়, ডাঙৰ বিষয় একো হ'ব নোৱাৰে যে আমাৰ জাতীয় গুৰুজনক আমি ক'ৰবাত নহয় কেতিয়াবা কোনোবাই যেতিয়া চিনাকি নোহোৱা পৰিলক্ষিত হয় তেতিয়া আমাৰ অন্তৰখনত খুব দুখ লাগে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যেতিয়া এনেদৰে শংকৰদেৱক বিচাৰি দূৰ দূৰণিৰ পৰা বাট কুৰি পাই আহে তেতিয়া আচলতে বুকুখন গৰ্বত ফুলি যায়। আমাৰ অসমীয়া জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আমিও দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব। প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি এনেদৰে সহযোগিতা আগবঢ়াই আমাৰ জাতীয় গুৰুজনক বিশ্ব দৰবাৰত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকে আমি দায়বদ্ধ হোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। কেমেৰা পাৰ্চন ৰাকেশ সাহুৰ সৈতে ৰিয়াৰাণী দত্তৰ ৰিপৰ্ট, আছাম ফ্লেছ। আপুনি চাই আছে আছাম ফ্লেছ, ডিস্কভাৰ ডিভাইন।